Okay, hello everyone, and welcome to Dark Horse Talks. So this is the mutual fund tool that we have been talking about since long time. I will try to convey this presentation in Hindi and English as well because a lot of users have been requesting recently to say convey in Hindi, and some users are asking to convey in English. So I will try to make sure that I try to cover both things in Hindi as well as in English. The major portion of this session would be in English. However, some points I will also try to cover in English as well. Okay, so this is the basically the front page of this mutual fund analytics tool. Basically what this tool does is it helps you to track the mutual fund activity. Say for example, what are the stocks that mutual fund houses are buying on a monthly basis. Say for example, DSP mutual fund is buying shares of Sheila Foam Limited, so they have purchased the shares of Sheila Foam in this month, as well as they are also adding the Sheila Foam shares in next month. So this gives you a basic idea about what are the activities or what are the things that their mutual fund are carrying out on month basis. So this is not in an investment tool. Say for example, it is not going to help you to make a decision whether to invest in a mutual fund scheme or not, but it will help you how to track the mutual fund houses. So I'm hoping that you have watched the basic theoretical explanation video. If you have not watched it, then please go back and watch that 5 minutes video. Although I'm sure that a lot of users have been commenting that there is a computer sound and it is very annoying, but those 5 minutes is very necessary that you listen to that audio, and only then you jump onto this presentation, because that is how you are going to able to understand the conceptual clarity of what does this actually platform does, because this concept is actually in actual very difficult to understand, and very more difficult to design it. So this is the link, mutualfund.darkhorsetalks.in. You'll not be able to log in at this present because we have blocked the users, the other users, outside users, from using this platform, because it would create a lot of traffic and we will not be able to present you the platform the way we wanted to present. But later on, when you want to just go and check out this platform, maybe tomorrow or sometime, then you can just go to this link and you can check out the platform as well, stocks.in. So this is the link to the platform. Currently you may not be able to log in at this point of time. If you are able to log in, you will not be able to see the data that we wanted to show. Okay, so this is the platform. You can just go to this link tomorrow or maybe day after tomorrow, and this platform will be open for your inspection. Okay, so now beginning with the platform. Basically this platform is divided into 5 different areas is scheme, houses, sector, stocks and managers. We'll start this thing with the scheme, because scheme is the most easiest thing to understand, and once you understand the scheme basics, you will be easily able to jump onto all the other sections. Okay, so we are starting with the scheme. Okay, since my laptop is a bit slower, it takes a lot of time to loading. Actually the site is not this slow, but too many things are running on this software, so it is taking a bit longer. So yes, now here is the list of all the schemes that are available for tracking. So basically we have just started this platform with 11 AMCs, 11 to 13 asset management companies, and you can check Aditya Birla AMC, Axis AMC. These are some basic asset management companies, and you can track the schemes of this AMC from here. So for this purpose, for the presentation purpose, we are going to track DSP small cap fund, because I have been following this DSP small cap fund from quite a long time, and I personally also have an SIP in this scheme. So we are going to use for simplicity the DSP asset management company, DSP small cap fund, and Vineet Sambre, the fund manager who manages the DSP small cap fund. So beginning with the DSP small cap fund, you can directly search from over here, as well as you can also search from all this list various schemes that you want to track. So we'll be starting with DSP small cap fund. Okay, so here it is, DSP small cap fund. Okay, so the first chart shows basically the historical holdings. So what are actually the shares held by DSP small cap fund? Okay, so it is taking a bit longer. Okay, yeah. So when you click on the companies, these are on the left side, these are the companies that DSP small cap fund is holding. The shares of these companies are held by DSP small cap fund. So when you click on one of the companies, it will load a chart over here. So this chart is basically divided into three parts, based on the market value,
based on the quantity and based on the portfolio. So beginning 2019, we have started from 2019. So from 2019, it will show you what is the position of DSP small cap fund in the shares of Nilkamal Limited. For example, let's say I'm switching on to quantity because this is the easiest part to understand. So for example, in January 2019, DSP small cap fund held 78 lakh shares. Okay, it's 7,87,000 shares of Nilkamal Limited. Now, if you check over the period of time, slowly and steadily, they have increased their holdings from 7,87,000 shares to around 9 lakh, 10 lakh shares, and currently they are holding around 12 lakh 56,000 shares. So this will give you a basic idea about that DSP small cap fund is constantly adding Nilkamal Limited shares. The reason is that they are seeing very good growth opportunities in these things, and that is one of the reasons that you can explore Nilkamal Limited on your personal portfolio basis to explore Nilkamal for long term. Now this is based on the quantity. The same thing can be further diversified on the market value. Say for example, if you click on the market value, it will show the market value of the shares held by DSP small cap fund. So basically this value is in lakhs. These are the values in lakhs. So for example, in January 2019, the DSP small cap fund used to held 107 crore worth of shares of Nilkamal Limited. 107 करोड़ रुपीस के शेयर नीलकमल के डीएसपी स्मॉल कैप फंड में थे जनवरी 2019 में, जो अभी बढ़कर हो गए हैं उसकी वैल्यू 338 करोड़। तो ये 3 गुना उनकी होल्डिंग बढ़ गई है नीलकमल लिमिटेड में। तो ये होल्डिंग बढ़ गई है तो उसका एक रीज़न ये है कि उन्होंने क्वांटिटी बढ़ाई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उन्होंने क्वांटिटी सिग्निफिकेंटली इंक्रीज़ किए। यहाँ पे वो 7 लाख शेयर्स 8 लाख शेयर्स होल्ड करते थे, अभी उन्होंने 12 लाख 12.5 लाख शेयर होल्ड करते हैं। ठीक है, तो ऑलमोस्ट 50% इंक्रीज इज इन बिकॉज ऑफ द क्वांटिटी। और अगर हम नीलकमल का चार्ट देखें तो नीलकमल की शेयर की प्राइस भी सिग्निफिकेंटली स्टेडीली ओवर द पीरियड हैज़ इंक्रीज। ओके, सो लेट्स लुक एट द चार्ट ऑफ द नीलकमल लिमिटेड। तो बेसिकली ये प्राइस चार्ट वाला फीचर अभी बाकी है क्योंकि उसकी APIs वी आर नॉट परचेज। सो इफ़ वी चेक ओवर हियर कि भाई पिछले 3 साल में नीलकमल के शेयर्स कितने प्रतिशत बढ़े हैं, तो अगर देखा जाए फ्रॉम 2019 समवेयर ओवर हियर कि 2019 में 970 रुपीज़ उसके शेयर की प्राइस थी, अभी उसके शेयर की प्राइस हो गई ऑलमोस्ट 2500। तो शेयर की प्राइस भी ऑलमोस्ट 3 गुना हो गई है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि दे आर स्लोली एंड स्टेडीली स्टिल इंक्रीजिंग देयर होल्डिंग्स इन नीलकमल लिमिटेड। सो दिस shows that Nilkamal has very good potential and users can also explore Nilkamal Limited. We have also covered Nilkamal Limited on Dark Horse Stocks. So somewhere around almost 1400 or 1500 levels we had covered Nilkamal Limited on Dark Horse Stocks because at that time we were also seeing good growth potential. Okay, so if we search from over here, okay, so yes, we had covered around 13 December 2020. So उस तक अगर देखा जाए तो प्राइजेस वेयर अराउंड 13 दिसंबर के 1400 रुपीज़ समथिंग प्राइस थी और अभी ऑलमोस्ट 2500 रुपीज़ प्राइस है। सो द प्राइस हैज़ ऑलमोस्ट इंक्रीज मोर देन 1000 रुपीज़। तो दिस गिव्स यू अ बेसिक आइडिया दैट व्हाट आर द शेयर्स दैट आर परचेज बाय म्यूचुअल फंड स्कीम्स। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप कोई भी कंपनी अगर देखते हैं तो आपको उसका लाइन चार्ट तीनों सेक्टर में डिवाइड हुआ मिलेगा। नाउ फॉर एग्जांपल इफ यू स्विच ऑन द पोर्टफोलियो वेटेज, तो ये आपको वो दिखाएगा कि व्हाट इज द पोर्टफोलियो वेटेज ऑफ दैट शेयर इन द एंटायर स्कीम। से फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर देखें तो नीलकमल लिमिटेड का 2% पोर्टफोलियो वेटेज था, 2.24%। नाउ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम दैट 2% पोर्टफोलियो वेटेज हैज स्टेडीली इंक्रीज्ड to 4%. Now this 4% shows a huge amount क्योंकि DSP small cap fund has invested heavily in this company that we can see that this is very good company for long term. तो ये एक एग्जाम्पल है, आपको बेसिक आइडिया आएगा कि what are the shares they are buying and selling. तो यहाँ पे आप कोई भी कंपनी सिलेक्ट कर सकते हैं और उसका आपको यहाँ पे चार्ट मिल जाएगा। जैसे कि शीला फॉर्म है, तो शीला फॉर्म वी हैव ऑल्सो कवर्ड ऑन डार्क हॉर्स स्टॉक्स। और अगर आप देखें तो यहाँ पे उन्होंने स्टेडीली होल्डिंग इंक्रीज की ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो देखा जाए तो शीला फॉर्म की उन्होंने क्वांटिटी अगर कंपेयर करते हैं देन फॉर एग्जाम्पल इन somewhere back in like March 2020 they started buying the shares. February में 0 शेयर्स थे, मार्च में उन्होंने 4 लाख शेयर्स परचेज किए, 4,25,000 एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम दे इंक्रीज देयर होल्डिंग्स टू 5,25,000 शेयर्स. ओके, सो लेट्स से फॉर एग्जांपल ओवर हियर फ्रॉम 5,25,000 दे इंक्रीज देयर होल्डिंग्स टू 7,61,000 शेयर्स. तो ये कब की बात है? लास्ट ईयर अगस्त की बात है. एंड वी हैव ऑल्सो कवर्ड द सेम ऑन डार्क हॉर्स स्टॉक्स. सो इफ वी चेक शीला फॉर्म, ओके, सो वी हैव कवर्ड दिस सेम ऑन ऑलमोस्ट सितंबर. तो जहाँ पे देख सकते हैं कि उन्होंने होल्डिंग स्लाइटली इंक्रीज की है, तो हमने तभी कवर कर लिया था 7,61,000 शेयर्स. जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं उन्होंने परचेज की ऑलमोस्ट 2 लाख शेयर्स. देन वी हैव सजेस्टेड शीला फॉर्म. तो हमें यहाँ से एक हिंट मिली कि भाई दे आर बाइंग शीला फॉर्म. नाउ लेट्स डिग फर्दर दैट व्हाट इज द ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स ऑफ शीला फॉर्म लिमिटेड. सो लेट्स से इफ वी लुक एट द प्राइस चार्ट ऑफ शीला फॉर्म,
Okay, so in last 1 year Sheela Foam has performed tremendously good. Okay, 1 year का प्राइस चार्ट अगर देखा जाए तो उन्होंने शीला फॉर्म हैज गिवन रियली गुड रिटर्न्स. Okay, so let's say for example here from starting from over here in almost we suggested back in September. तो यहाँ पे देखा जाए तो सितंबर के 300 एंड ऑलमोस्ट 1400 से 1300 के बीच का लेवल था एंड करंटली द स्टॉक इज अगेन ट्रेडिंग एट 2500 रुपीज. सो इट इज ऑलमोस्ट गेन ऑफ 1000 रुपीज. सो दिस इज द टूल दैट यू कैन यूज टू गेट द hints of what big funds are buying and what they are selling, so you can dig further into the companies and you can get more idea about what they are doing. So now you can also track sector outlook also. So for example if you go to the sectors तो सेम यहाँ पे चार्ट और लोड होगा. जैसे कि अगर आप टेक्सटाइल प्रोडक्ट का देखते हैं तो यहाँ पे ये दिखाएगा कि उन्होंने टेक्सटाइल सेक्टर में उनका क्या पोजीशन रही है. जैसे कि अगर हम देखें यहाँ पे तो पोर्टफोलियो वेटेज, तो यहाँ पे देखें कि फॉर एग्जांपल इन 2019 दे हैड 7.72% वेटेज इन टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स, जो स्लोली एंड स्टेडीली कम हो गया. तो यहाँ पे देखा जाए तो दे हैव डिक्रीज देयर होल्डिंग्स टू 4.52%. अब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम दैट हैज अगेन स्टेडीली इंक्रीज एंड हैज इंक्रीज मोर देन 86%, हाईएस्ट एवर. तो अभी उनका हाईएस्ट होल्डिंग इन टेक्सटाइल सेक्टर्स एंड दैट इज 8.68%. सो दे आर एक्सट्रीमली बुलिश ऑन टेक्सटाइल सेक्टर. जैसे कि अगर फार्मास्यूटिकल सेक्टर को कंपेयर करते हैं देन व्हाट इज देयर पोजीशन इन फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स. तो यहाँ पे एक फार्मास्यूटिकल सेक्टर का चार्ट है. तो दे हैड 6% होल्डिंग इन फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स एंड अगेन आफ्टर अ स्टेडी डिक्रीज इन फार्मास्यूटिकल दे आर अगेन इंक्रीजिंग देयर होल्डिंग्स इन फार्मास्यूटिकल सेक्टर. सो गोइंग फॉरवर्ड इट कैन फर्दर बी एक्सपेक्टेड दैट फार्मास्यूटिकल सेक्टर इज नॉट गोइंग टू परफॉर्म एक्सट्रीमली वेल एज टेक्सटाइल सेक्टर. टेक्सटाइल सेक्टर में उनका होल्डिंग अभी बढ़ के 8.68% हो गया है, फार्मास्यूटिकल में 4.33% हो गया है. सो दे आर लाइक नॉट वेरी बुलिश, नॉट वेरी बेरिश ऑन द फार्मास्यूटिकल सेक्टर. अगेन यहाँ पे मार्केट वैल्यू देखें तो मार्केट वैल्यू में हमने क्या किया है कि जो भी फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स की कंपनी वो पोर्टफोलियो में होल्ड करते हैं वो सारी कंपनीज को कंबाइन करके उसकी मार्केट वैल्यू निकाली है. ठीक है, तो फॉर एग्जांपल तो टोटल एक्सपोजर मतलब अगर फंड में कुल 1000 करोड़ की एसेट अंडर मैनेजमेंट है तो उसमें से फॉर एग्जांपल इन द मंथ ऑफ नवंबर दे आर होल्डिंग 374 करोड़ वर्थ ऑफ शेयर इन फार्मास्यूटिकल सेक्टर. तो ये कंपनीज हम देखेंगे कि कौन कौन सी कंपनीज में उन्होंने पैसे डाले हैं. दिस इज द फर्दर बाइफरकेशन इज अवेलेबल एज वी मूव डाउन. तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी. दिस इज द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ डीएसपी स्मॉल कैप फंड. इसमें हम सिर्फ स्कीम का पोर्टफोलियो एनालिसिस ट्रैक करेंगे, व्हाट दे आर बाइंग, व्हाट दे आर सेलिंग एंड व्हाट इज द पैटर्न ओवर अ लॉन्गर पीरियड. ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको ये टेबल में डेटा भी अवेलेबल मिल जाएगा. तो अगर चार्ट में से भी आप कंपेयर कर सकते हैं और यहाँ पे लाइव डेटा भी आप चेक कर सकते हैं. एज यू चेंज द परसेंटेज वैल्यू यहाँ पे अगर डायरेक्टली परसेंटेज वैल्यू चेंज हो जाएगी. ठीक है, जैसे कि यहाँ पे फार्मास्यूटिकल 9.22% से कम होकर अभी 4.33% उनका होल्डिंग हो गया है. सो दिस इज द बेसिक चार्ट, line chart. Okay, the next chart is portfolio classification. Again the portfolio classification is basically divided into two types, large cap, small cap and mid cap. So basically DSP small cap fund is itself a small cap fund. तो इसमें क्या होगा कि दे हैव मेजॉरिटी ऑफ देयर होल्डिंग्स इन स्मॉल कैप स्कीम. तो यहाँ पे अगर देखें तो ये स्मॉल कैप में उन्होंने 73% उनका जो होल्डिंग है वो स्मॉल कैप में. नाउ दिस इज द वन ऑफ द यूनिक चार्ट. नाउ दिस वाज द आइडिया ऑफ द डेवलपर एंड ही हैज डेवलप्ड अ चार्ट वेरी ब्यूटीफुली कि भाई उसने यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं. जैसे कि इफ यू क्लिक ऑन स्मॉल कैप चार्ट देयर विल बी अनदर चार्ट लोडिंग दैट वेयर हैव एक्चुअली दे पुट देयर मनी. तो यहाँ पे अगर देखा जाए उनका टॉप 20 होल्डिंग्स, तो यहाँ पे स्मॉल कैप में टॉप 20 होल्डिंग्स में आप देख सकते हैं कि विच आर द टॉप 20 होल्डिंग्स ऑफ डीएसपी स्मॉल कैप फंड. तो मैंने देखा कि नीलकमल लिमिटेड इज द टॉप मोस्ट होल्डिंग, वो 4% होल्ड कर रहे हैं स्मॉल कैप में. सो दिस इज द चार्ट फॉर स्मॉल कैप स्कीम. नाउ इफ यू क्लिक ऑन मिड कैप तो यहाँ पे मिड कैप का चार्ट लोड हो जाएगा और यहाँ पे देख सकते हैं कि उन्होंने मिड कैप में कौन कौन सी कंपनीज में इन्वेस्ट किया है. सो फॉर एग्जाम्पल दे हैव इन्वेस्टेड इन हाईएस्ट their investments in Atul Limited. Now again when you hover on this, if in the tool tip you can find the quantity that is 3,37,965 shares, the weightage 3.7% and total amount. This amount is again in lakhs, so that is equal to 305 crore. तो 305 करोड़ के उनके पास अतुल के शेयर्स है. ओके, also over here you can find the detailed list of tables. We are also provided with the tables. इसमें सारी कंपनीज कवर हो जाएगी, जो कंपनी चार्ट में भी नहीं है वो इसमें कवर हो जाएगी. ओके, so you can just check the mid cap, small cap as well as all the other schemes. Now again here it is available on the sector. तो मतलब what is the sectorial bifurcation of the mutual funds assets. तो उन्होंने कौन कौन से सेक्टर में कितने पैसे डाले हैं वो यहाँ से हम देख सकते हैं. ठीक है, so basically okay, so these are the list of the sectors. You can see the list of sectors on the left side. Say for example अगर यहाँ पे फिर से यहाँ पे अगर टेक्सटाइल सेक्टर में जाके हम क्लिक करते हैं कि टेक्सटाइल सेक्टर, तो यहाँ पे नीचे टेक्सटाइल का
चार्ट लिंक हो जाएगा, लोड हो जाएगा. सो दिस शोज कि भाई टेक्सटाइल सेक्टर में उन्होंने कहाँ पैसे डाले, वेयर दे हैव पुट द मनी ऑन इन द टेक्सटाइल सेक्टर. Okay, so this is SIYSL, this is CRM Silk. This is also one of the companies in our consideration. The DSP small cap fund has been holding this company from very long time, and the company has not shown any good amount of price appreciation because maybe company is under consolidation or results are not up to the mark. So we are closely watching this company, and you can also watch this company CRM Silk Limited. Okay, तो यहाँ पे अगर देखा जाए फॉर एग्जाम्पल इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में, तो यहाँ पे उन्होंने इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में कौन कौन सी कंपनीज में पैसे डाले, यू कैन ऑल्सो चेक द सेम. ओके, जस्ट अ मिनट. या ओके, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स. ओके, सो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में अगर नीलकमल लिमिटेड, फिन केबल्स, फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज, स्वराज इंजीन इज ऑल्सो गुड कंपनी एंड वी ऑल्सो कवर्ड ऑन डार्क स्टॉक्स. तो बेसिकली ये आपको एक आइडिया देगा कि वेयर दे हैव पुट देयर मनी इन द स्पेसिफिक सेक्टर. ओके, तो दिस इज द पाई चार्ट. नाउ वी आर मूविंग टू वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट दैट इज पोर्टफोलियो एक्टिविटी. ये आपको ये दिखाएगा कि हर मंथ में व्हाट इज देयर पोर्टफोलियो एक्टिविटी. दिस activity is basically divided into 4 categories: new, add, sold and exit. New में ये दिखाता है कि what is something that they have purchased first time. पहले उनके पोर्टफोलियो में ये चीज़ नहीं थी, अभी वो फर्स्ट टाइम एंटर कर रहे हैं. So this is a huge sign. Okay, this is the huge sign that you should definitely explore this company because they have newly started adding these shares to their portfolio. Addition में ये दिखाएगा कि जो उनके पास पहले shares पड़े थे, which the shares they were already holding and now they are adding to their portfolio. In sold category again it will show that they are selling the shares of the company. और सेम एग्जिट में आपको दिखाएंगे they have completely exited, अभी उनके पास एक भी शेयर नहीं बचा है. सो दैट इज द 4 कैटेगरीज दैट इज डिवाइडेड. अगेन इसको आप तीनों कैटेगरी में बाइफरकेट कर सकते हैं बेस्ड ऑन द मार्केट वैल्यू, बेस्ड ऑन द पोर्टफोलियो वेटेज एंड बेस्ड ऑन द क्वांटिटी. सो वी आर गोइंग टू शो यू ओनली क्वांटिटी. यू कैन एक्सप्लोर मार्केट वैल्यू एंड पोर्टफोलियो वेटेज ऑन योर ओन. तो यहाँ पे देखा जाए कि फॉर एग्जाम्पल लेटेस्ट जैसे कि जुलाई मंथ में, अभी जुलाई के मंथ का डेटा लोड होना बाकी है, इट विल बी लोडेड मे बी टुडे और टुमारो. सो फॉर एग्जाम्पल जुलाई में उन्होंने न्यूली जस्ट डायल के शेयर्स परचेस किए 3,69,000. तो सबसे पहली बार उन्होंने 4 लाख शेयर्स परचेस किए जस्ट डायल के जस्ट जुलाई मंथ में. सो 1 जुलाई से लेकर 31 जुलाई के बीच में उन्होंने 4 लाख शेयर्स, ऑलमोस्ट 4 लाख शेयर्स जस्ट डायल के परचेस किए. इफ यू चेक अनदर कंपनी इन जून दे आर परचेस जेंसा टेक्नोलॉजीज, और जेंसा टेक्नोलॉजीज का शेयर हैज ग्रोन ट्रिमेंडसली इन पास्ट फ्यू मंथ्स. इट वाज हिटिंग ऑलमोस्ट 5% सर्किट एवरी डे. Okay, so this is going to give you a basic idea how to track the market. So if we check the Zensa technologies over here, okay, yeah, see, as I was talking, Zensa Technologies has moved from 280 rupees to almost 485 rupees. तो मतलब सोच सकते हैं कि उन्होंने जस्ट 1 जून से लेकर 31 जून में अगर परचेस किया है तो उनकी प्राइस रेंज परचेस की ऑलमोस्ट 280 से लेकर 330 तक रही होगी. और उसके बाद आप देख सकते हैं कि स्टॉक हैज परफॉर्म ट्रिमेंडसली, मतलब डायरेक्ट 300 रुपये का 500 रुपीज़, 200 रुपीज़ का गेन हो गया है. तो दिस टूल इज गोइंग टू गिव यू अ बेसिक आइडिया अबाउट विच शेयर्स यू शुड एक्सप्लोर एंड विच शेयर्स यू शुड बी, इफ यू आर हैविंग इन द पोर्टफोलियो, यू शुड बी कॉशन ऑन दैट शेयर्स, दैट यू शुड बी सेलिंग दो शेयर्स, और यू शुड बी क्लोजली वॉचिंग कि भाई अगर आगे कोई मूवमेंट हो तो भाई एग्जिट कर लो कंप्लीटली. ठीक है, मूविंग ऑन टू एडिशन. तो देखिए फॉर एग्जांपल वी आर गोइंग टू चेक ओनली रिसेंट वंस. तो टेक्नो इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग के शेयर्स उन्होंने लेटेस्ट में परचेस किए जुलाई मंथ में, और यहाँ पे बहुत सारी कंपनीज है जैसे कि बटरफ्लाई गांधीमती अप्लायंसेस, हिम्मत सिंह का. तो दिस आर द शेयर्स दे हैव एक्चुअली परचेस इन द मंथ ऑफ जुलाई. यहाँ पे आप बाकी मंथ्स के भी चेक कर सकते हैं जैसे कि यहाँ पे फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज हैज परफॉर्म एक्सट्रीमली वेल. उन्होंने 80 लाख शेयर्स परचेस किए अप्रैल मंथ में. तो इफ वी चेक द फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज, मोस्ट ऑफ यू हैव माइट बी होल्डिंग इन फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज इन योर पोर्टफोलियो बिकॉज वी हैव कवर्ड फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज लाइक 2 or 3 times ऑन डार्क स्टॉक्स. तो ये मतलब दिस शेयर्स परफॉर्म फिनोमिनली वेल. एंड व्हाई यू कैन गेट मोर कॉन्फिडेंस जस्ट बाय लुकिंग एट दिस दैट दे हैव परचेस फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज. तो सेल्स की बात करते हैं, सोल्ड तो उन्होंने क्या सेल किया है, दिस इज गोइंग टू बेसिक आइडिया. तो जैसे कि देखा जाए कि वेल्सपन इंडस्ट्रीज यहाँ पे उन्होंने सेल किया है, थोड़े शेयर्स सेल किए, कभी कभी पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग भी करते हैं तो आपको एग्जैक्ट जजमेंट नहीं आएगा. ओके, फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज इज अपीयरिंग ट्वाइस ओवर हियर, मतलब यहाँ पे उन्होंने परचेस किया था अप्रैल में और अभी वो शायद थोड़ा पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, ऐसा भी हम एज अ जजमेंट ले सकते हैं. ठीक है, तो दिस इज गोइंग टू बेसिक आइडिया. और लास्ट में देखा जाए तो एग्जिट. तो जैसा कि देखा जाए कि वर्तमान स्पेशलिटी स्टील में उन्होंने जून मंथ में कंप्लीटली एग्जिट कर दिया है. सो दे आर नो लॉन्गर होल्डिंग द शेयर्स ऑफ वर्तमान स्पेशलिटी स्टील्स आफ्टर जून. सो इफ यू आर होल्डिंग इन वर्तमान स्पेशलिटी स्टील्स, मे बी दे मे नॉट बी सीइंग वेरी बुलिश ट्रेंड इन वर्तमान स्पेशलिटी स्टील्स, बट इफ यू आर सीइंग देम then there is no wrong that they can be also wrong and you can be also be wrong. So it is not like that they have exited so we should also be exit. We should need to do more research about the company that
दे हैव एग्जिटेड। ओके, थोड़ा क्वेश्चन रखना चाहिए क्योंकि वो ज़्यादा रिसर्च करते होते हैं, उनके पास पूरी टीम रहती है एनालिस्ट की। सो ऐसा रहेगा कि भाई उन्होंने अगर कोई पोजीशन में एग्जिट किया है तो काफ़ी रिसर्च किया हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि हर बार वही सच वही वो जो करे वो सही हो, कभी कभी वो भी गलत हो सकते हैं। तो आप एक बेसिक अनुमान लगा सकते हैं कि आप में इसका क्वेश्चन रखना चाहिए। ठीक है, सो दिस इज बेसिक अबाउट दैट। और यहाँ पे अगर देख सकते हैं तो हमने पूरे एसेट क्लास का एक टेबल दिखाया है, जैसे कि फॉर एग्जांपल दे आर होल्डिंग व्हाट अमाउंट दे आर होल्डिंग इन लार्ज कैप इक्विटीज, इक्विटी मिड कैप, स्मॉल कैप। जैसे कि फॉर एग्जांपल मार्केट वैल्यू के कंपेयर करें, सो दे आर एज ऑफ लेटेस्ट जुलाई 2021 दे आर होल्डिंग लाइक 6,100 करोड़। तो 6,100 करोड़ इज बेसिकली पार्कड इन इक्विटी स्मॉल कैप फंड। तो यहाँ पे आपको टोटल आइडिया आ जाएगा। टोटल फंड साइज है जैसे कि फॉर एग्जांपल 8,265 करोड़, 8,000 करोड़ का फंड है डीएसपी स्मॉल कैप का। तो बेसिक आपको यहाँ पे आइडिया आएगा कि कहाँ पे उन्होंने पैसे डाले हुए हैं। और पोर्टफोलियो वेटेज देखा जाए तो यहाँ पे आपको एक पोर्टफोलियो वेटेज भी मिल जाएगा, जैसे कि स्मॉल कैप में थे वो लाइक इन्वेस्टेड 73% ऑफ देयर पोर्टफोलियो, इक्विटी में 97, टोटल सारी इक्विटी में मिलके जैसे स्मॉल कैप मिड कैप लार्ज कैप में होके ये डाला है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द डीएसपी स्मॉल कैप स्कीम। नाउ लेट्स से कि भाई हमें ट्रैक करना है, व्हाट वी वांट टू ट्रैक इज कि पूरा डीएसपी फंड क्या कर रहा है। ओके, पूरा डीएसपी फंड, नॉट जस्ट वन स्कीम, पूरा डीएसपी फंड मतलब सारी उसकी इक्विटी स्कीम, मतलब सारे फंड मैनेजर्स मिलके क्या कर रहे हैं। देन वी विल जस्ट गो टू हाउसेस। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, वी हैव कंबाइंड द डेटा ऑफ ऑल द डीएसपी स्कीम्स। तो सारी डीएसपी की स्कीम को एक साथ कंबाइन कर दिया है और उसका डेटा यहाँ पे डिस्प्ले किया है। तो यहाँ पे अगर आप जैसे देखते हैं तो वी विल यू फ्रॉम जस्ट टेबल यू विल बी एबल टू सी द ऑल द लिस्ट ऑफ डीएसपी स्मॉल डीएसपी स्कीम्स दैट वी आर ट्रैकिंग। ओके, तो बेसिकली जस्ट अ मिनट, या just a minute. Okay, so the page is loading. Yes. ओके, सो दीज आर द स्कीम्स दैट वी आर कंबाइंड। तो जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे डीएसपी की सारी स्कीम्स हमने कवर कर ली है। जैसे कि यहाँ पे देखें तो ये सारी स्कीम्स में जो भी इक्विटी है सबको टोटल कर दिया है, सबका मिला के टोटल कर दिया है। एज ए डीएसपी एसेट मैनेजमेंट कंपनी एज अ होल्ड क्या कर रही है वो हमें पता चलेगा। जैसे कि टॉप 100 इक्विटी है, स्मॉल कैप फंड है, शॉर्ट टर्म सेविंग फंड, इसमें जो भी इक्विटी उन्होंने इन्वेस्ट की वो सबको कंबाइन करके ये डीएसपी एसेट मैनेजमेंट कंपनी एज अ होल्ड का हमने ये पेज तैयार किया है। जैसे कि मिड कैप में भी क्या इन्वेस्टमेंट, तो सबका कंबाइन किया हुआ है यहाँ पे। तो अगर यहाँ पे हम ऐसे कोई भी एक चार्ट लेते हैं, तो फॉर एग्जांपल इफ वी से लेट्स से एचडीएफसी बैंक, तो यहाँ पे अगेन सेम कैटेगरी में सेम फॉर्मेट में ये चार्ट लोड हो जाएगा। अगेन इट विल बी डिवाइडेड इन 3 क्लासेस, एसेट क्लास मतलब वैसे मार्केट कैप बेसिस पे, क्वांटिटी के बेसिस पे, एंड बेस्ड ऑन द पोर्टफोलियो वेटेज। पोर्टफोलियो वेटेज यहाँ पे क्या रहेगा कि टोटल इस सारी स्कीम्स का कंबाइन होकर, जैसे कि टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट उनके पास है 1 लाख करोड़, तो उसमें से एचडीएफसी बैंक में सभी स्कीम में कंबाइन होकर उन्होंने क्या पैसे डाले, व्हाट मनी दे हैव पुट combined on a combined basis in each scheme will be shown over here. Okay, तो डायरेक्ट क्वांटिटी में चलते, क्वांटिटी इज द इजीएस्ट वे टू अंडरस्टैंड दिस चार्ट। सो लेट्स से यहाँ पे they were holding, okay, I have to manually count these numbers, so it is like 1 crore shares, okay, almost 1 crore shares in February, and they have increased their holdings steadily from 1 crore to almost like 2.22 crore shares as of October 2019, October 13, 2019. And as we see that they have slowly decreased their holdings in HDFC Bank. HDFC Bank में holdings decrease किया because RBI recently उन पे ban डाल दिया था। RBI had put ban on HDFC Bank from selling any credit cards, and that has severely affected द फाइनेंशियल रिजल्ट्स ऑफ HDFC बैंक। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उन्होंने होल्डिंग्स कम कर दिए, दे हैव स्लोली स्टेडीली डिक्रीज देयर होल्डिंग्स, बट नाउ अगेन दे आर इंक्रीजिंग देयर होल्डिंग्स फ्रॉम लाइक 1.39 करोड़ टू स्लोली दे आर बाइंग एवरी मंथ सम शेयर्स। तो यहाँ पे एक देख सकते हैं कि वो लोग धीरे से HDFC बैंक के शेयर्स बाय कर रहे हैं सारी स्कीम्स में मिलके। सो येस, यू शुड डेफिनेटली वॉच HDFC बैंक। ओके, यहाँ पे अगर पोर्टफोलियो देखें तो सारी स्कीम में जैसे कि पूरा HDFC बैंक में उनके पास अगर 1 लाख करोड़ का फंड है, तो उसमें से लाइक दे वर इन्वेस्टेड almost 6% in HDFC Bank. 6% in HDFC Bank is a huge number. Okay, over the period that holdings has decreased significantly. If you see now, their HDFC Bank represents only 3.4% of DSP asset management company's portfolio. So this is the basic idea that you will be getting. Now again, as a sector, you can check out the same as a sector. Now if they are bullish on sector and the finance, in software banks, तो ये same chart रहेगा scheme के हिसाब से, but here the data will be combined basis. Okay, the chart is loading.
a lot of data is coming into this thing, so basically the chart is taking a bit time to load. Now यहाँ पे देखें तो portfolio weightage, जैसे कि finance software as a whole, तो they were like invested 5% in the software. Okay, तो 5% उनका total holding software में था. Now they have increased their holdings in software sector to almost like 8.2%. So they are very much again bullish on the software sector. This is one of the hints that we can get in terms of market value. सारी companies जैसे कि Infosys, TCS में अगर उन्होंने क्या investment किया है वो आपको यहाँ पे पता चल सकता है. जैसे कि देखा जाए तो ऑलमोस्ट दे हैव इन्वेस्टेड लाइक 2000 करोड़. जनवरी में 2000 करोड़ रुपए उन्होंने सॉफ्टवेयर सेक्टर में डाले थे. नाउ दैट होल्डिंग्स हैज इंक्रीज स्टडीली टू ऑलमोस्ट लाइक डबल. तो अभी दे आर लाइक 4600 करोड़ उन्होंने सॉफ्टवेयर में डाले. टोटल एसेट मैनेजमेंट के 4600 करोड़, दैट इज अ वेरी बिग नंबर. सो दे आर अगेन सीइंग वेरी बुलिश ट्रेंड इन द सॉफ्टवेयर. तो ये एक आपको बेसिक हिंट देगा. ठीक है, अगेन सिमिलर वे में यहाँ पे पोर्टफोलियो का क्लासिफिकेशन किया हुआ है कि चार्ट है, पाई चार्ट. इसमें आप देख सकते हैं कि सारी स्कीम ने कंबाइन मिलके कहाँ पैसे डाले. तो मतलब डीएसपी की ऐसा भी हो सकता है कभी कभी कि लार्ज कैप की ज़्यादा स्कीम होगी, स्मॉल कैप की कम स्कीम होगी. तो ऐसा भी हो सकता है कि लार्ज कैप में उन्होंने लाइक 40% दे हैव एंटर्ड इन लार्ज कैप स्कीम. अगेन व्हेन वी आर क्लिकिंग ऑन दिस पाई चार्ट, इट विल लोड द लार्ज कैप चार्ट. So for example, if we check the top 10 holdings, then ICICI Bank is the topmost holding, and we have also seen that yesterday only ICICI has declared superb numbers, phenomenal set of numbers. So yes, they are again bullish in ICICI Bank, and they are actually holding the largest pie in the ICICI Bank. So this gives you immense amount of insight into the companies. Basically what you are trying to do is you are trying to catch the fund manager's mind. So they are seeking extremely bullishness in the ICICI Bank, and you already can find out from this chart that no, they have already invested in ICICI Bank. I should definitely explore ICICI Bank for long term. So this is one of the hits. Again, small cap में देखा जाए, small cap is one of my favorite area. So I'll be talking more about small cap. So this is SFL. Just I forgot the code of SFL. Let me check. Okay, Sheela Foam. Again, Sheela Foam Limited is one of my favorite companies, and you can check that Sheela Foam has performed extremely well, and they are actually holding a large amount of shares in Sheela Foam Limited across all the schemes. So yes, definitely at this point of time, Sheela Foam is definitely worth exploring. So you should also check Sheela Foam Limited. Now, this is the basic chart. Also in the sector, you can check about where they have invested heavily. So as we talked in the previous chart that they have currently increased their holdings in software sector by large amount. So you can check the software from over here. This chart is loading. Just a minute. Okay, over here. So this is the breakdown of the sectorial holdings of DSP asset management company as a whole. तो सारे स्कीम्स ने मिलके कहाँ पैसे डाले वो यहाँ से आप पता लगा सकते हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वी आर टॉकिंग अबाउट द सॉफ्टवेयर सेक्टर. सो वेयर इज द सॉफ्टवेयर सेक्टर? आई एम नॉट एबल टू फाइंड द सॉफ्टवेयर सेक्टर. ओके, मे बी इट माइट बी हिडन ओवर हियर. जस्ट अ मिनट. Software, yeah, over here 7% is represented by software sector. Okay, I'm not able to find it. Okay, just leave it. Yeah, so for example they are holding like say 1 crore 39 lakh shares of Infosys Limited, Mindtree 13 lakh shares. So they are heavily invested in software sector. Now if we check over here, yeah, okay, I got it. Software sector is over here. Yeah, so yeah, it is the was misplaced. Okay, so majority of their holdings is in Infosys. So they are actually very bullish on Infosys. We can also say that like that. Also they are holding HCL Technologies, Mindtree. So you will get a basic idea. Let's say for example in consumer durables, there is one of the FMCG companies. Basically they are just where they are holding the shares of these companies. So for example Crompton Greaves, they are holding like 1.3%. So they are like the holding is around like 780 crore worth of shares they are holding in Crompton Greaves. So 1.6 crore shares. Okay, that is a very big amount. So you can just go through these charts and you will get a basic idea about what they are buying, what they are selling. And as a asset management company, like in what happens in asset management companies, that there are so many schemes and there are so many fund managers. So what we did is that DSP as a whole, what they are doing. So when so many fund managers are buying some company's shares, and when so many fund managers are extremely bullish on that company's shares, it is really a good sign to explore that company for long term. So you will get a basic idea from this sector chart in DSP. Now again, as we said that DSP as a whole, what they are completely buying new, what they are added. Okay, so यहाँ पे देखे that we also check that they are purchased just L shares, but the quantity over here is more. Why? Because the shares are purchased in many other schemes as well.
Okay, so they have purchased these shares first time in the month of July, just dial shares, but they have also purchased these shares in too many schemes. Say for example small cap में तो purchase किए हुए हैं, but उसके अलावा कोई और scheme में भी उन्होंने ये share purchase किए. So you can get a basic idea that which is the newly purchased share. Okay, Zensar Technologies, which we talked last time, so they have purchased in June month, and since then from 280 the share has reached 480 rupees. Okay, so if we check what they are adding on month basis, then let's say for example which is a big quantity. Okay, NMDC, this is government company, we don't track government companies. Okay, so ONGC again government company. Okay, Power Grid again government company, 3 lakh shares is not a big amount for them. Okay, so Tech Mahindra again, we said that they were extremely bullish on software, and they have purchased 4,29,000 shares of Tech Mahindra in the month of July. So we are currently in October, so might be the share has already moved significantly. Okay, Whirlpool is one of the latest dark horse stock idea, and it has not performed. The stock is almost down like 5% or 6% from the suggested price. So you can check from over here that the DSP fund is very bullish on the Whirlpool. Now you can see that each month since last 6 months they have each month added Whirlpool shares. So you can get a big hint that Whirlpool is definitely something that you should have in your portfolio or you should explore for long term. In latest month they have purchased 4,35,000 shares. So this is actually a big amount, and this is actually a big boost and big confidence that you can explore Whirlpool for long term. Okay, so these are the other companies, and if we see any other big companies, okay, HCL Technologies 10 lakh shares, it's also a very big number. ICICI Bank, again, see, we can check that they are constantly adding each month, and with the latest results of ICICI Bank, we can see that they are actually bullish on ICICI Bank. So you can get a basic idea. Okay, so you can just go through this again. Now we can just check this on a sector as well. So when we check on the sector, you can see that quantity is not going to help you much in the sector, because some shares may be trading at 50 rupees, some may be trading at 100 rupees. So quantity is not going to help you at all. Okay, but yes, you can check on portfolio weightage. Say for example, if they have increased the portfolio weightage of specific sector in a month or not. Say for example, new sector is not with that because they are not going to add any new sectors. But let's say that they have added like 0.37% of the sectors from the past month. So basically they have added significant amount of shares in financial sectors. If let's say in what is the position in the software, let's say software. Okay, here, so yes, they've actually not increased much amount in the software sector in July, because other funds might actually क्या होगा कि यहाँ पे वैल्यू नहीं आई है. इसका रीज़न ये है कि पिछले महीने में सॉफ्टवेयर की वैल्यू ज़्यादा रही होगी, तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर की वैल्यू कम हो गई होगी. सो बेसिकली न्यू एडिशन वोंट हैपन. मतलब पिछले में अगर दे वर होल्डिंग लाइक शेयर्स ऑफ 1 crore वर्थ ऑफ शेयर्स, तो अभी उनकी वैल्यू 1 crore ही रही होगी. सो दैट इज द रीजन इट इज नॉट शोइंग एनी न्यू एडिशन. But yes, if you check the company, then you can see that they have added significant amount of shares in HCL Technologies, Tech Mahindra, यहाँ पे shares add किए हुए हैं. ठीक है, so you just go through the companies and you just go through once all these basic things, and then you will get the idea. If you have any questions, you just drop us a message on WhatsApp, and we'll be happy to help you understand the more concepts in more detail. Okay, now third important aspect is fund manager. So what we are going to do is we are going to track the fund manager. We have tracked scheme, we have tracked asset management company as a whole, and now we are going to track the fund manager. तो बेसिकली फंड मैनेजर में क्या रहेगा, वी विल बी गोइंग टू ट्रैक विनीत सामरे. वी कैन ऑल्सो ट्रैक प्रशांत जैन इज opens to be one of the biggest fund managers as most far as the asset under management is concerned. He is managing the topmost schemes of HDFC, like HDFC top 100 or something like that, and it has very huge asset under management. So we can also track that, but we are going to stick with the Vineet Samre because he is the DSP's fund manager, and we have also far used DSP asset management company for all the schemes. Now what Vineet Samre is doing is he is basically fund manager in this many schemes. Okay, so you can check that he is fund manager in DSP small and mid cap fund, top 100 equity fund, focus mid cap fund, small cap fund. So what we have done is we have combined the data of this. So what we are trying to catch from this is that what Vineet Samre is actually thinking. Okay, so what we are trying to track with this is what individual fund manager Vineet Samre is thinking, that what is his view about the market. He may not directly say that I have purchased the shares of this company, but you can get a basic idea that if he is purchasing the shares of software company, he is very bullish on software. Okay, so this is the basic idea of this thing. Again, we are starting with the line chart. In the line chart, we are going to show, let's say for example, Infosys. Okay, so Infosys, and again Sheila Foam. We have also used Sheila Foam. So let's load the charts of this both the companies. Okay, it's taking a bit longer because of my laptop. Yeah.
yeah, Sheela Foam. Okay, so now as we check that the market value has increased because Sheela Foam has moved from like 1400 rupees to 2500 rupees. Now Vineet Samre is managing these schemes, and those schemes have invested very heavily in Sheela Foam. So say for example, Vineet Samre was not holding at all. He actually, let's say that it is like that. We can think of this like that. In February 2019, Vineet Samre didn't know about Sheela Foam. He didn't know that there was a company named Sheela Foam exist. This is hypothetical. Okay, now he explored the stock and he saw that the company has a good potential. So he purchased the shares of Sheela Foam from 1st March to 31st March, and he increased his holdings in Sheela Foam to like 9,25,000 shares. Okay, now after a period of time, he again explored the stock and he felt that Sheela Foam is doing good. Let's buy another amount of stocks. Let's add more stocks to the portfolio. So he increased his holdings to like 22,90,000 shares. And we can see that in past 1 year, only 1 year, Sheela Foam has moved from 1400 rupees to 2500 rupees. So yes, he has been right all entire time. So his analysis is perfect. He has done a very tremendous job in generating very good amount of returns. So yes, Sheela Foam is definitely good stock to explore. So you can clearly see from over here that what actually is his thinking. He thinks that Sheela Foam is doing good. Now over the last 1 month, if we check, then he has slowly started decreasing the holdings in Sheela Foam. So maybe we can say that now he sees that Sheela Foam is definitely good company, but let's book partial profits. There may be some consolidation in short term period, or maybe like 6 months or 12 months down the line. We'll again start buying after 12 months. So he has started a small profit booking at 2500 rupees in Sheela Foam. So that is clearly visible from over here. Okay, now again, if we check the market value, we have also recovered the market value. So you can check the market value. So the market value of Sheela Foam was like 150 crores in holdings, and that has significantly increased to like 538 crores. Okay, similar to the portfolio weightage. Portfolio weightage is basically going to show you his weightage in Sheela Foam across all the schemes combined. मतलब पांचों स्कीम में टोटल फंड है 5000 करोड़ का, तो उसमें से टोटल पोर्टफोलियो उसने शीला फॉर्म में एलोकेट किया है, तो इट इज़ लाइक जस्ट 1%. ओके, तो 1% पोर्टफोलियो उसने शीला फॉर्म में एलोकेट किया है, जो स्लोली एंड स्टेडीली यहाँ पे बढ़ चुका है. मैक्सिमम 2% तक गया था, तो अभी आप देख सकते हैं थोड़ा नीचे आ रहा है. नाउ ही इज, वी कैन से दैट बुकिंग पार्शियल प्रॉफिट्स इन शीला फॉर्म. ठीक है, तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग रही. नाउ वी आर मूविंग टू सेक्टर्स. ये एक बेसिक, ये सेक्टर इज गोइंग टू बिग हेल्पफुल बिकॉज यहाँ पे आप फंड मैनेजर का व्यू देख सकते हैं कि भाई क्या वो बुलिश है ये सेक्टर पे, डज द सेक्टर इज एक्चुअली परफॉर्मिंग गुड. तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मार्केट वैल्यू, अगर पोर्टफोलियो वेटेज सॉफ्टवेयर में काफ़ी बढ़ रही है, तो यार ही वॉज लाइक हैविंग वेटेज ऑफ ओनली 0.70% इन पोर्टफोलियो, और वो बढ़ के हो गई है लाइक 7%. नाउ ही इज एक्सट्रीमली बुलिश ऑन सॉफ्टवेयर. ठीक है, तो दिस इज वन ऑफ द जजमेंट. आई एम नॉट सेइंग दैट दिस इज गोइंग टू बी एन एक्यूरेट और एक्चुअल आउटकम. दिस इज जस्ट एन हाइपोथेटिकल assumption कि भाई ही इज बुलिश ऑन सॉफ्टवेयर सेक्टर, सो वी शुड डेफिनेटली एक्सप्लोर सॉफ्टवेयर सेक्टर. Okay, now let's say cement sector. Cement is one of the very hype sector as of now. So let's say what he thinks about cement sector. Okay, so yes, it is somewhat steady. He is not increased much holdings in cement sector, and it has not decreased. So it is somewhat steady, and he is very steadily pursuing the cement sector. Let's say about textile cotton. Okay, this is one of the very good sector with government PLI schemes, and we have covered Ambika cotton mills. So this sector should definitely be holding slight increase in holdings. So yes, we can see that from 0.6% the holdings has increased slightly to around 1 or 1.36%. Almost double weightage कर दिया है टेक्सटाइल सेक्टर को. ठीक है, so this is the fund manager as a whole that we are tracking. Okay, now again the pie chart यहाँ पे सारी schemes का combine कर दिया है. What he is holding in small cap, large cap, you can just go through this. I'm not going to go again in this detail because it is actually very exhausting on my side as well as on your side to understand. Once you say try to play with these charts, you will be more familiar on how to use this. Dhanuka Agritech, okay, he is very bullish on Dhanuka Agritech, and he is steadily holding Dhanuka Agritech since past few months. We have suggested Dhanuka Agritech on Darko stocks, and stock is like almost trading in the same range. So past में कुछ अभी एक क्वार्टर का रिजल्ट ठीक नहीं रहा है, but yes, definitely users can explore Dhanuka Agritech. Now again, तो what Vineet Samre as the fund manager is completely doing, तो भाई उसने जुलाई मंथ में कोई शेयर्स न्यूली परचेज किए, तो कि yes, Just Dial we saw in the DSP small cap fund, तो ही न्यूली परचेज द शेयर्स ऑफ Just Dial लिमिटेड. उसके अलावा उसने कोई शेयर्स नए परचेज किए, तो उसमें Zensa टेक्नोलॉजीज वी ऑलरेडी सॉ इन द पास्ट वीडियोज, आई मीन पास्ट फ्यू मिनट्स. Okay, what is he adding? Let's say what is the shares that he is completely adding. Okay, ICICI Bank he added in the month of June, and currently the June quarter results is extremely good. So yes, he has been right about ICICI Bank. So let's say what about other companies? You can just go through that. Sun Pharma. Okay, Sun Pharma is one other company that we are watching closely. So you should definitely watch Sun Pharmaceuticals closely, and we can see that he is constantly adding Sun Pharmaceutical shares each month. Okay, and that is also a very good quantity. So this is going to give you a basic idea. Again, same you can check on the sector basis. So what is the holdings in sector, portfolio weightage.
क्वांटिटी मतलब सारे शेयर्स की, जैसे कि एक सन फार्मा है, दूसरा इप्का लेबोरेटरीज है, तीसरा लुपिन है. तो व्हाट वी डिड इन क्वांटिटी इज वी combine the quantity on a total basis. Say they are holding 100 shares of Sun Pharma, 100 shares of Lupin and 100 shares of Ipca Laboratories. Then it will show over here 300 shares. अब 300 से लेके यहाँ पे 350 हो गया, तो it will give you a basic idea that he added 50 shares of pharmaceutical companies, but it will not show you which company shares it has purchased. तो वो आपको डायरेक्ट कंपनी में से ही चेक करना पड़ेगा. ठीक है. तो अगेन दिस इज द बेसिक आइडिया अबाउट दैट पोर्टफोलियो वेटेज एज वेल. यू कैन जस्ट गो थ्रू दिस. ओके. नाउ दिस इज द पोर्टफोलियो मार्केट वैल्यू. यहाँ पे सारे स्कीम की कंबाइन किया है एज एक्सप्लेन इन डीएसपी एसेट मैनेजमेंट कंपनी. ठीक है. तो यहाँ पे डायरेक्ट आपको एक्सप्लेन कर दिया हुआ है. ठीक है. तो यू कैन जस्ट वॉच दिस एंड यू कैन चेक द पोर्टफोलियो वेटेज वेयर ही हैज पुट द मनी. से फॉर एग्जांपल ही हैज लाइक पुट 27% इन स्मॉल कैप, ऑलमोस्ट 40% इन मिड कैप. इसमें एग्जैक्ट जजमेंट नहीं आएगा क्योंकि ही इज ऑल्सो मैनेजिंग स्मॉल कैप फंड, तो उसमें ज़्यादा इसको वेटेज स्मॉल कैप का ही देना रहेगा. इफ ही इज इन्वेस्टिंग सिग्निफिकेंटली इन मिड कैप देन ही हैज टू पुट लार्ज अमाउंट ऑफ वेटेज ओनली इन मिड कैप स्कीम्स. Okay, so this is the basic thing, and now we are going to move to the most important aspect and one of the best aspect about this thing is, say for example he purchased the shares of Sheela Foam, but let's say Sheela Foam के shares और भी कोई सी कंपनी ने purchase किए. I want to check if any other fund is also buying the shares of Sheela Foam. Okay, so that is the thing, that is definitely a question you need to ask. What if DSP is buying? What if the Nippon Asset Management Company is buying? What if Aditya Birla Sun Life is also buying this company? Then that could be again big boost to your investment thesis. So for example यहाँ पे अगर हम चाहते हैं then we can find the list of all the stocks. ओके. तो जो भी शेयर्स जो भी म्यूचुअल फंड होल्ड कर रहे हैं यू कैन जस्ट गो थ्रू दिस शेयर्स. तो इसमें आपको पूरा रिवर्स इंजीनियरिंग किया हुआ मिलेगा. डेटा विल बी कम्प्लीटली रिवर्स. इन दिस इट विल बी शोइंग फंड मैनेजर, एसेट मैनेजमेंट कंपनी, स्कीम्स. ओके. तो ये डेटा पूरा रिवर्स ऑर्डर में शिफ्ट हो जाएगा. Okay, I'm just loading this data and then we'll move to one of the companies which we can explore. Okay. For the companies I will be like selecting which company should I select. Okay. Just a minute, let me load this chart, then we'll look at the company to explore. It is taking a bit longer, more than long. Good. या सो लेट्स से यहाँ पे इसमें फॉरेन की कंपनीज भी आपको मिल जाएंगी क्योंकि बहुत सी स्कीमें जो एमएनसी फंड चलाती है. से फॉर एग्जांपल मोतीलाल ओसवाल इज एमएनसी फंड, सो दे आर लाइक इन्वेस्टिंग इन द शेयर्स ऑफ से अल्फाबेट और से माइक्रोसॉफ्ट और अमेजॉन. सो यू कैन ऑल्सो ट्रैक दोज काइंड ऑफ शेयर्स दैट इफ माइक्रोसॉफ्ट शेयर्स एनी फंड हैज बीन बाइंग और सेलिंग और जस्ट लाइक दैट. ओके. सो देयर इज सम ग्लिच ओवर हियर. जस्ट अ मिनट. Okay, wait, let me open again. Okay, yeah. Let's say again we should be like, we can also search from over here, but having a list is more comfortable, but let's just use the list from here. This is search is a like global search. For example, you can track any of the shares, you can track the scheme at the same time, you can also track the asset management company, fund manager, anything. You can just type in over here and you will get the list. Okay, let's track Advanced Enzyme Technologies. This is also one of the companies that we have suggested in Dark Horse Stocks, and like we are exploring again to suggest this stock again. Okay, so yeah. So again, now this thing is divided into three categories. It is the reverse order. Okay, as we have discussed, again mutual fund is a scheme. कौन सी स्कीम होल्ड कर रही है? फंड हाउस. मतलब सारी फंड कंबाइन होके कौन से एसेट मैनेजमेंट कंपनीज में और कौन से मैनेजर यहाँ पे ट्रैक कर रहे हैं. ठीक है. अगेन व्हेन वी से स्कीम, ओके, फॉर एग्जांपल एचडीएफसी स्मॉल कैप स्कीम इज होल्डिंग दिस कंपनी. यहाँ पे क्लिक करते हैं तो उसका चार्ट लोड हो जाएगा. ठीक है. ओके, व्हाई इज नॉट लोडिंग? ओके, जस्ट अ मिनट. The data is coming a bit slower. Actually my laptop is getting slow. Yeah. Okay. HDFC small cap fund.
Okay. Yeah. So again, the HDFC small cap fund is divided into three categories: market value, quantity, and portfolio weightage. So we are going to use quantity as well. Okay, quantity. So for example, यहाँ पे देख सकते हैं कि उसके पास like almost 43 lakh shares थे in January 2019. So HDFC small cap fund used to hold 43 lakh 50,000 shares of advanced enzyme technologies in January 2019. Slowly and steadily, that holdings went up from 43 lakh to 55 lakh shares. Okay, as we check that advanced enzyme has given returns of like 100% रिटर्न फ्रॉम 190 टू 400 रुपीज. तो यहाँ पे देख सकते हैं उन्होंने क्लियरली बाय किया है एंड एडवांस एंजाइम हैज ऑल्सो परफॉर्म. बट इन रिसेंट टाइम्स, इन पास्ट 4 or 5 months or maybe like 6 months, the stock has not performed, and the reason is that we are seeing that they are clearly that HDFC fund is not seeing any potential growth opportunities and they are selling each month. तो यहाँ पे उन्होंने clearly almost उनका holdings decrease कर लिया है. The same thing we can check that what was the portfolio weightage of advanced enzymes in HDFC small cap fund. Okay, so यहाँ पे देख सकते हैं कि portfolio weightage is almost like, okay, there is some glitch in the data. Why is it showing 51%? Okay, I have no idea about this. Okay, we'll skip this for a while. Let's say for example market value. Yeah, is a market value, for example, yes, it is like 71 crores of shares in September 2019, and that holding is like around 209 crore rupees. तो मतलब एडवांस एंजाइम ने परफॉर्म किया है, बट नाउ दे आर सेलिंग द शेयर्स ऑफ एडवांस एंजाइम्स. ओके, यहाँ पे अगर अगेन वी चेक हाउस, तो HDFC की सारी स्कीम्स को मिलाकर उन्होंने क्या किया है. ओके, सो फॉर एग्जांपल HDFC की दो स्कीम में हमने देखा कि दे आर होल्डिंग द शेयर्स ऑफ एडवांस एंजाइम्स, एंड एज वी सी दैट नाउ दे आर स्लोली एंड स्टडीली डिक्रीजिंग देयर होल्डिंग्स इन एडवांस एंजाइम टेक्नोलॉजीज. Okay, so for example यहाँ पे peak पे almost like 78 lakh 24,000 shares they were holding, and now they have decreased their holdings to like 47 lakh shares. So this will give you a basic idea about the companies कि भाई advanced enzyme में companies, what are the asset management companies doing. Okay, मोतीलाल ओसवाल, तो for example just a minute, yeah, तो मोतीलाल ओसवाल इज होल्डिंग वेरी नॉमिनल शेयर्स, और वो भी यहाँ पे कभी कभी जीरो हो जाते हैं. नो, निप्पॉन हैज़ ऑल्सो डिक्रीज देयर होल्डिंग्स फ्रॉम लाइक 18 lakh शेयर्स टू नाउ दे आर ऑलमोस्ट होल्डिंग नो अमाउंट ऑफ शेयर्स इन एडवांस एंजाइम टेक्नोलॉजीज. तो यहाँ पे आपको रिवर्स ऑर्डर में डेटा मिल जाएगा. यहाँ पे आप फंड मैनेजर भी ट्रैक कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल विच फंड मैनेजर इज एक्चुअली व्हाट इज द फंड मैनेजर्स एक्टिविटी इन दिस स्पेसिफिक कंपनीज. तो आप रिवर्स ऑर्डर में भी सर्च कर सकते हैं. सो फॉर एग्जांपल ही इज नॉट होल्डिंग एनी शेयर्स, बट ही स्टिल इन पास्ट मे बी ही वॉज होल्डिंग एनी शेयर्स. ओके, चिराग स्टेलवार्ड is basically a fund manager of HDFC small cap fund. So as we check, that HDFC small cap fund was holding the shares of advanced enzyme, and now they have been steadily decreasing the holdings in HDFC small cap fund. Okay, तो यहाँ पे एक बेसिक आइडिया आपको मिल जाएगा शेयर्स का. नाउ दिस इज द थिंग दैट यहाँ पे कौन कौन से फंड होल्ड करते हैं उसका टोटल लेके ये पोर्टफोलियो ब्रेकडाउन किया है. तो फॉर एग्जांपल 3 एसेट मैनेजमेंट कंपनीज एडवांस एंजाइम में शेयर्स होल्ड कर रही है. ठीक है, देयर 3 एसेट मैनेजमेंट कंपनीज आर होल्डिंग शेयर्स ऑफ एडवांस एंजाइम टेक्नोलॉजीज. तो हु इज द बिगेस्ट होल्डर of the advanced enzyme shares. Okay, so for example, as we check that HDFC, 2 schemes of HDFC small cap fund and another scheme HDFC, they are holding significantly high amount of shares of advanced enzymes. So now we can check that 2 funds, HDFC small cap fund and capital builder fund, are holding shares of advanced enzyme technologies, and from here we can also check the quantity, market value as well. ठीक है, निप्पॉन इज होल्डिंग वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ शेयर्स एंड दैट इज प्रॉबेबली अराउंड नथिंग. तो यहाँ पे ये आपको बेसिक आइडिया हो जाएगा कि कौन से फंड ने सबसे ज़्यादा पोजीशन ले रखी है इन स्पेसिफिक स्टॉक. ओके, अगेन दिस इज अगेन डिवाइडेड इनटू 3 सेक्टर: न्यू, एड, सोल्ड एंड एग्जिट. वी ऑल नो व्हाट डज दिस मीन. तो यहाँ पे देख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल जून मंथ में किसी ने अगर न्यूली परचेस करना स्टार्ट किया है कि नहीं. सो इफ वी चेक दैट यहाँ पे HDFC ने नई पोजीशन लेनी स्टार्ट की है. ठीक है, HDFC प्रूडेंशियल स्मॉल कैप फंड परचेज द शेयर्स ऑफ advanced enzyme technologies for the first time in the month of July. Okay, they purchase in the month of June, they purchase like 9 lakh shares. Okay, यहाँ पे अगर एडिशन में देखते हैं कि क्या हमें कुछ मिलता है, तो like no, after that they have not added the shares of advanced enzyme, but they have first time purchased the shares in the month of June. Okay, again if we check over here from fund house, then it will show the combined activity. Say for example in recent months, that in March, April, May, June, ICICI mutual fund is adding shares of advanced enzyme technologies. In the sales category, if we see, then HDFC fund is selling the shares of advanced enzyme technologies. So we can like correlate from over here that HDFC fund is selling the shares of advanced enzyme technologies and ICICI is buying the shares of advanced enzyme. Now we can, let's say for example, keep a watch on this thing, that how is this thing going to perform. Say well, who is right. It is like if HDFC is right, then the shares of advanced enzyme should go down. But if ICICI is right, then the shares of advanced enzyme should move up. Okay, so that is something to track on. We cannot take exact judgment from who is buying and who is selling, but yes, we can get the basic idea that who is right and who is wrong. Okay,
from this. Okay, now this is something that is pending. It is basically bulk deal data. So we have covered most of this data. Now we have also covered the sector, but this sectorial outlook is not ready at this point of time, because it will not give you a basic idea about which are the shares. You cannot directly correlate. You can correlate, like if you can check it from over here, that for example chemicals hai, so chemicals mein which are the companies that have covered in chemicals. Okay, so for example if we check chemicals, okay, let's say chemicals. So what we have done is that we have combined the data of these 5 companies that are representing the chemical sectors. Okay, I'm not going to go into much detail, but I'm just going to give you a big brief overview about what is about covered in the chemical sector. Okay, so let's say from over here, yeah, so let's say these are the companies that belong to the chemical sector. तो इन सारी कंपनीज का टोटल ले लिया है, और यहाँ पे हमने ट्राई किया है दिखाने का कि व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ द फंड्स इन द केमिकल सेक्टर. लेट्स से फॉर एग्जांपल इफ यू गो टू हाउस, तो यहाँ पे अगर HDFC का लोड करते हैं तो विल गेट अ बेसिक आइडिया कि उनका केमिकल का वेटेज क्या रहा है. Yeah, so now if we check the portfolio weightage, then we can see that HDFC fund has been like slowly and steadily decreasing their holdings from chemical sector, from like they were holding like 27% in chemical sector, so now they are slowly and steadily decreasing. तो मतलब ये चार्ट अभी एग्जैक्ट आपको वैल्यू नहीं दिखाएगा बिकॉज इट इज़ लाइक अंडर कंस्ट्रक्शन, बट आई विल गिव यू अ ब्रीफ आइडिया. फॉर एग्जांपल HDFC फंड इन लाइक इधर यहाँ पे 26% होल्ड करता था, तो नाउ दे हैव डिक्रीज देयर होल्डिंग्स. So you can just get a basic idea that they are selling the shares of these companies. You can find more detail about going to specific scheme or specific asset management company as a whole or specific stock. ठीक है, सो दिस इज लाइक दैट. यहाँ पे मैनेजर का भी उसी तरह से आप देख सकते हैं कि उनका इस सेक्टर में क्या वेटेज रहा है. सो दिस इज बेसिक आइडिया. ओके, इट इज अंडर कंस्ट्रक्शन एंड मे बी इट विल बी रेडी लाइक 1 or 2 days. तो पोर्टफोलियो क्लासिफिकेशन अगेन कि भाई विच फंड इज हैविंग हाईएस्ट एक्सपोजर टू केमिकल सेक्टर. जैसे कि इतनी सारी स्कीम्स है, इन सारी स्कीम्स ने केमिकल सेक्टर में इन्वेस्ट करके रखा है, तो किसका होल्डिंग यानी कि किसका एक्सपोजर सबसे ज़्यादा है. देन वी कैन सी दैट निपॉन हैज़ लाइक 27% एक्सपोजर टू केमिकल सेक्टर. ओके, तो यहाँ पे उन्होंने कौन कौन सी स्कीम में क्या क्या पैसे डाले, यहाँ पे आप उसकी इंडिविजुअल स्कीम से जाके ट्रैक कर सकते हैं, या फिर निपॉन एसेट मैनेजमेंट कंपनी एज अ होल से चेक कर सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे आप देख भी सकते हैं ऑलमोस्ट कंपनी के नाम्स भी यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, जैसे कि स्कीम के नेम्स. यानी कि HDFC स्मॉल कैप स्कीम में इतनी क्वांटिटी केमिकल्स में डाली हुई है, तो आप देख सकते हैं HDFC स्मॉल कैप स्कीम में जाके कि विच आर द शेयर्स दैट आर हेल्ड बाय HDFC स्मॉल कैप फंड इन केमिकल सेक्टर. Okay, it is a bit complex, I know, to understand, but yes, we have tried to simplify it as simple as possible, but this you will get more idea only when you start actually using this platform. Okay, it is going to be a big helpful. Now again if you check over here, then again add new. So what is the new position? January में नए इसीलिए आएंगे because we have not tracked the data before January, so new is going to appear in January. Okay, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भाई they are increasing their holdings in June. तो यहाँ पे let's say for example Motilal Oswal, Nippon, they have like purchased 8 lakh shares of so many companies belonging to chemical sector. This was a brief overview. Okay, now other pages are also ready as well, so you can check about us page, and when you go on a blog it will redirect you to the Dark Stocks main page. Okay, so this was the basic crux of idea, and this is the link that we have been telling, mutualfund.darkstocks.in. You have to compulsory log in to this link to use this platform, and once you log in then you will be redirected to the home page. So this is the home page. You can use the global search to make the search of anything. It is mentioned over here that you can search company, scheme, asset management company, sector and fund manager as well. Okay, so this was all about the Fundalysis. If you have any questions, you can just drop a mail, or you can send us a WhatsApp message, and you can also comment on this video in the description in the comment section. Okay, I hope you have like able to grasp the concept of this thing, because it is a very heavy to understand, because when I started using out these things I was not able to find any specific website that can give me so much data analytics of what actually mutual funds are doing. Now we are planning to develop this platform on a very big scale, so we want like we can start generating the reports. So if you like follow any specific fund, then all you have to do is click on a follow button, and each month we'll be sending you the reports that what is the amount that the shares are that the fund has purchased the shares of this company, so and so, if they have sold the shares of this company. We'll like trying to explore more, and that is the reason that we are asking for 15,000 rupees in Dark Stocks payments for this platform. This platform will be free to use for 3 months, mostly 3 months, and post 3 months we'll be providing this platform to only those users who have like contributed 15,540 rupees. Okay, so
if possible, please do contribute 15,540 rupees to use this platform, because it takes immense amount of say hard work to develop this platform. And so far we have not approached to any of the venture capital funds or any other funds, because the sole motive of those funds is to generate profits. मतलब पहले ही दिन जाते हैं भाई हमको पैसा कैसे मिलेगा हमारा वापस, what are the user base that you are targeting, what is the price of the subscription plan that you are targeting. So we don't want to fall into that thing. We want this thing to accessible to smallest user as possible. Okay, so that is the reason that we are trying to keep this platform for free. Okay, that is all for the Dark Horse Talks. You can just go to the payments option, and you can also contribute on monthly basis, weekly basis, and one time basis. Okay, so that was all for Dark Horse Talks. We hope that you are very much familiar with this concept, and if you like, then please do subscribe to one of our Dark Horse Talk plans. And thank you so much for watching. Okay, thank you so much.